Well students, today I am going to discuss the structure of heart with you. As you know, there are 4 chambers in the heart. We will talk about the chambers in the heart. There are 4 chambers in the heart. Okay? 4 chamber होता है हमारा heart. We will talk about the this is superior और अपर वेना केवा, and this is inferior और लोअर वेना केवा. इसको लोअर वेना केवा भी कहेंगे, inferior वेना केवा को. There are 4 chambers in the heart and there is partition which is known as septum. Okay, this is right atrium and this is right ventricle. This is left atrium and this is left ventricle. And there are valves to prevent the backward flow of blood from one chamber to another chamber. Left atrium से left ventricle के अंदर blood आ गया and we want if the blood moves backward, there will be no circulation of blood. So there is valve present in between left atrium and left ventricle. And if we talk about right atrium to right ventricle, blood flows and here valve is also present. So the function of valve is to prevent the backward flow of blood. Function of valve in the heart is to prevent backward flow of blood and to ensure यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड. ये भी हो सकता है कि ये हो कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ही हो ब्लड का, और टू एंश्योर यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड. ठीक है. अब जो हार्ट होता है उसकी जो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है वहाँ से एक कौन सी अराइज होती है, आयोटा अराइज होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से. जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा तो उसके अंदर से एक लार्जेस्ट आर्टरी, बॉडी के अंदर जो लार्जेस्ट आर्टरी है वो क्या है, आयोटा, वो अराइज होता है. आयोटा के अंदर से 4 आर्टरीज निकलती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एज यू नो inside the left ventricle oxygenated blood is present, in the 2 chambers oxygenated blood is present, and in the right atrium and right ventricle deoxygenated blood is present. So blood from the left ventricle pumped into aorta and it is supplied to the body by means of 4 arteries. ठीक है, 4 arteries के थ्रू blood जो है बॉडी को सप्लाई हो जाएगा थ्रू aorta. Okay, and if we talk about blood flows from right atrium to right ventricle and then it pushed upward again, and it is supplied to pulmonary trunk and it enters into the pulmonary trunk. From pulmonary trunk pulmonary arteries arise. pulmonary trunk के अंदर से क्या arise होती हैं, pulmonary arteries, and through pulmonary arteries blood enter into the lungs. Okay, from lungs it carry oxygen and from lungs pulmonary veins arise and they supply oxygenated blood to the left atrium. These are pulmonary veins. जो लंग्स के अंदर एंटर करेंगी वो पल्मनरी आर्टरीज होंगी और जो लंग्स के अंदर से बाहर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगी दैट इज पल्मनरी वेन्स. पल्मनरी ट्रंक क्या है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से लेके जा रही है लंग्स के पास, और लंग्स के अंदर से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी दैट इज पल्मनरी वेन.
तो एक्सेप्शनल आर्टरी एंड एक्सेप्शनल वेन प्रेजेंट इन द हार्ट. Exceptional artery which is present only in heart is pulmonary artery. पल्मनरी का वर्ड का मीनिंग होता है लंग्स. एक्सेप्शनल वेन which is present in heart, which is present only in heart is pulmonary vein. ठीक है जी. Exceptional artery which is present only in heart is pulmonary artery. Exceptional vein which is present only in heart is pulmonary vein. तो आपको मैंने क्या बताया था हार्ट की फंक्शनिंग के बारे में. देयर आर 4 चैम्बर्स इन द हार्ट एंड द पार्टीशन विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द चैम्बर्स ऑफ हार्ट इज सेप्टम. अगर हमारे हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सेपरेशन नहीं होगी तो एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नहीं होगा ऑक्सीजन का ब्लड के अंदर. एज यू नो फूड की ब्रेकडाउन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बॉडी के अंदर होती है. एंड वी आर हायर एनिमल्स. मैमल्स और बर्ड्स के केस में वी आर मैमल्स और बर्ड्स के केस में ऑक्सीजन डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, एनर्जी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर. सो देयर इज नीड ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनसाइड द सेल टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर. आपकी बॉडी के अंदर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि देर इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज दैट इज फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन द एरोबिक रेस्पिरेशन. ये आपने पढ़ा ही हुआ है. एरोबिक रेस्पिरेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. ओके, तो ये जो रिलीज होनी है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इट इज़ पॉसिबल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड को जो एनर्जी बनेगी ये क्या करेगी, ये हमारी बॉडी को के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में यूजअप हो जाती है. तो देयर इज नीड ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन हायर एनिमल्स लाइक मैमल्स एंड बर्ड्स.